So that was the first acting gig. उसके बाद I met Fatma Baji and Fatma Butt and Ahmed Ali Butt. वो भी modeling के through I met them. And वहाँ पे गाने लगे होते थे, you know, ऐसे ड्रामे तो अंदर सबकी नौटंकी तो हम सारे होते हैं अंदर से. तो उस पे I did something and Fatma Baji said that I think you should try an acting. तुमने वो है अंदर से. And I was like नहीं मुझे कुछ भी नहीं है, let it be. But we became really close. हम बहुत close हो गए. Where you know she was staying with me for a long time and you know we became like sisters. I love the girl to bits. So when she was getting married, you know. She said you have to come to my wedding. तो मैं शादी पे जब आए तो she said कि I'm gonna line up these things for you and you better at least audition please हो जाओ तुम, you know. So I said okay ठीक है. तो मैंने पहला BCW तब किया था. मैंने audition किया था youth pack के लिए और वो मुझे मिल भी गया था अल्हम्दुलिल्लाह. So you know she really pushed me at that time. You know करो 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 करो. यूफोन किया उसके बाद एक साल के बाद मुझे Facebook पे एक मैसेज आता है एक creepy से इंसान से कि hi I'm making a movie I want to cast you. I didn't even respond to that. I was like, yeah, I'm not gonna bother. मुझे क्योंकि इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस आते थे. फिर मुझे एक और मैसेज आया, and he said कि look, I know that I sound creepy right now, but I'm not a creepy person. मैं genuinely एक फिल्म बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपको उसमें कास्ट करो. मैंने फिर भी जवाब नहीं दिया. फिर उन्होंने मैसेज किया मुझे कहा कि आपने एहसन रहीम के साथ काम किया 1 साल पहले, आप उनसे मेरा पूछ सकते हैं, मैं एक लेजिट इंसान हूँ. फिर जब एहसन रहीम का नाम आया तो I said, I know him, एहसन भाई को जानती हूँ. So then I replied to him. एंड करते करते ऑडिशन हुआ. ऑडिशन उसका भी इंसान कौन था अब आप बताती हूँ मैं. नबील कुरैशी. नबील कुरैशी was not at all creepy. I love the guy to bits. लेकिन तो फिर ऑडिशन हुआ. नामालूम अफराद. Yes, and within a week मुझे पता भी नहीं चला कि लंदन से यहाँ पहुँच गई. नामालूम अफराद शूट होने शुरू हो गई. I was like, okay, that is what's happening. And then उसके बाद फिर मैं चली गई घर. I was like, नहीं मेरे बस काम नहीं है. I can't do it. I mean, I think I tried to quit acting several times actually. मैंने बहुत दफा कोशिश की acting छोड़. कोशिश नहीं, I think life, right? Because you already know I told you what I was going through back home. So I tried to let go of it because I felt like I had more important things to do. But it somehow just kept coming back. Somehow it just, I mean, I genuinely believe I never chose acting chose me. You know, I never chose a thug life chose me, that kind of thing. So I let go of several times. फिर कोई पता नहीं लॉन्ग की commercial थी and उसके लिए I went to Thailand and 2 साल के बाद 2 साल complete gap, complete silence from me. उसके बाद जब मैं वापस आई तो फिर डालडा की commercial थी. उसके लिए पाकिस्तान आई. मैं 5 दिन रही और मैं वापस लंदन चली गई. वहाँ से मुझे महेश भाई का मैसेज आया कि एक ड्रामा हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ लें. तो मैंने कहा कि मैं परेशान सी होगी. मैंने कहा मुझे एक्टिंग तो आती नहीं, ड्रामा करवा रहे हैं मुझसे. खैर उन्होंने कहा कि उसका नाम दासी है, यू नो दिस एंड दैट ब्ला ब्ला. उन्होंने सारी स्क्रिप्ट वगैरह भेजी मुझे. कट्टू मुझे कॉल आती है खातून की एंड बहुत प्यारी आवाज़ में कि आई वांट टू वेलकम यू टू आवर फैमिली ऑफ हम टीवी. एंड आई वाज लाइक ओके दिस इज इंटरेस्टिंग. तो वहाँ गई और वो ड्रामा दासी का नाम बाद में बन गया संगे मरमर. And the rest is history. The rest is history, yeah. At what point then did you come to terms with the fact that okay, I am an actor now, and maybe अब मुझे I don't think I still have. I don't think I still have. The thing is, Hassan, I still don't think I'm an actor. I don't think I can act. ठीक है? Genuinely speaking, मैं honestly मैं ये नहीं कह रही कि I'm being humble. No, I genuinely don't believe कि मैं acting कर सकती हूँ. लेकिन एक चीज़ मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ, वो है empathize करना. मैं लोगों के साथ एम्पथाइज बहुत कर सकती हूँ. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डू. जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ और मुझे अगर मुझे नहीं फील हो रही है एम्पैथी अपने कैरेक्टर के लिए तो मुझे पता है मैं वो कैरेक्टर नहीं कर पाऊंगी. राइट? सो आई एम्पथाइज विद द कैरेक्टर. मशल के साथ भी आई एम्पथाइज विद हर अ लॉट डिस्पाइट ऑफ हर बीइंग एन एंटागनिस्ट. I empathize with her a lot because I understood she's gone through a series of events for her to be the way she is. So yeah, I don't think I can act, but I can empathize और उसे कोई challenge करके channel करके acting. I think you're being humble. I'm sure I've known you for quite some time. Yeah. You are a very empathetic person, no doubt about that. But of course you're a good actor as well. ये भी इस बात को हम deny नहीं कर सकते. I mean case in point जितने भी and this could be a reason कि आप सिलेक्टिव काम करती हैं. Yes. Which is why वो जब जो आप कैरेक्टर करती हैं आप दिल से करती हैं, दिल से परफॉर्म करती हैं तो शायद वो निखर के भी ज्यादा सामने आता है. That could be a reason. I guess so. Perhaps because आप हर प्रोजेक्ट नहीं कर लेती. Yeah, I was talking to one of my colleagues the other day actually, and she was saying मैंने को 50 ड्रामे कर लिए हैं. And I was like, when did you start? And she's like, I don't know, about like 7-8 years ago. I'm like, same. फिर मैंने अपने हाथ पे काउंट किया and I had only done like 7 or 8 dramas. Yeah. And I was like, I've only done 7 or 8 dramas, really? But quality over quantity. Alhamdulillah, yeah. क्योंकि आपने जो 7 ड्रामे किए वो 7 के साथ सबको याद हैं.
साथ की साथ परफॉर्मेंसेस भी yeah. माशाल्लाह सबको याद हैं। यही फ़र्क है ना कि बट मुझे ये बताएं कि सॉरी थोड़ा सा शायद पर्सनल सवाल भी हो, बट बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं, दे टेक ऑन सो मच वर्क बिकॉज दे हैव टू रन देयर हाउस एट द एंड ऑफ द डे। सो हाउ डू यू मैनेज दैट, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज अ फाइनेंशियल एस्पेक्ट टू द जॉब एज वेल। Of course. See, the thing is, that's how I started work, right? Yeah, that's what I'm getting to. That's how I started work. I mean, आप सोचें एक 16 साल की लड़की walks into a house and स्कूल से आ रही है, ठीक है, और अभी खुद भी stitches लगी हुई हैं हर जगह पे उसको, स्कूल से आ रही है और वो अपने अब्बू को सलाम कहती है, वो कहते हैं तुम कौन हो, and you're just like what, like I mean आप process भी नहीं कर सकते ये चीज़. So but I think the fact कि वो एक hardship हुई, which is why I stayed on ground, and I'm grateful for the hardship at that time. But at the same time, modeling was a necessity for me for finances. लेकिन acting, I think मुझे एहसास हुआ कि I love acting and I am in love with acting was the day when मुकाबिल की पहली एपिसोड आई थी. I mean, I thoroughly enjoyed संगे मरमर. People loved it. People loved me. मुझे इतना प्यार मिला. लेकिन वो फिर भी, you know, you're like acting, right? मुकाबिल में भी एक्टिंग की. लेकिन मुझे मुकाबिल के वक्त, I kid you not, मुझे खत आए थे उस वक्त. People sent me letters. और एक मुझे Instagram पे DM आया था जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी. उसमें लिखा हुआ था कि एक मेरा डायलॉग था कि रेप एक दरिंदगी है, वो आपको चीर फाड़ के छोड़ जाता है और पीछे रह जाता है तो सिर्फ एक ढांचा. और नीचे लिखा हुआ था कि मुझे लगा आपने वो कह दिया जो मैं ना कह पाई. एंड आई रिमेंबर रीडिंग दैट. मेरी आंखों में, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में आंसू, और मुझे कायदा फील हुआ. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि पीपल आर एबल टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज we made it normal to talk about it. People are able to stand up for their right, for their izzat, for the family izzat, because so I realized कि हम चाहे ना चाहे हम norms set करते हैं, तो why not set the norms for things that make it easier for you to live life, you know. और सिर्फ लड़कियों की नहीं, मुझे लड़कों के खत आए, right? And मुझे याद है कि हालांकि मुकाबिल एक लड़की के बारे में था, लेकिन जब भी मैंने मुकाबिल को प्रमोट किया था, मैंने दोनों के बारे में कहा था, लड़की और लड़का, because लड़की is not the only one who goes through assault exactly at childhood. I mean, I know so many people who've gone through. और उस ड्रामे के बाद तो और ज़्यादा हो गया था. So that's when I realized that this is not just acting. This is making a difference to people's lives. People are standing up for themselves, for their happiness, and they're choosing happiness. जब मुझे इस बात का एहसास हुआ, that's when I fell in love, and I said कि अब वही character करना जो, you know, at least अगर even if it doesn't make a difference, it should at least make them smile, you know. But this is also why it's so important for actors to make wise choices about the characters that they take on. Exactly. हम हर रिव्यू में हर बार यही बात करते हैं कि you know people look up to you at so many various levels. It's not just entertainment. हम कहते हैं ना कि टीवी का काम एजुकेट करना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. एंटरटेन करना है, बट कभी-कभी आप सोल्यूशन दे जाते हैं लोगों को, जैसे लाइक यू नो वो लड़की जिसने आपको डीएम किया, एंड काउंटलेस अदर पीपल जो देखते हैं और वो कहते हैं यार कि ओके अगर यूं हो रहा है और यूं हमारी जिंदगी में भी हो रहा है, तो जैसे ये कैरेक्टर अपने आप को बचा रहा है, हम भी शायद बचा सकते हैं. फनी जो डिमेंशिया वाली बात है, मैंने आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम जिंदगी में आज ऑन एयर बोली है. मेरे बहुत कुछ दोस्तों को पता है इस बात का भी. मेरे चोबू को डिमेंशिया हुआ था, अल्जाइमर डिमेंशिया. आई हैव नेवर रियली स्पोकन अबाउट इट ऑन एयर. इट्स द फर्स्ट टाइम, एंड द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज हमारी मीडिया में नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि इफ यू हैव गॉन थ्रू समथिंग इट्स ओके, यू डोंट हैव टू पुट मट्टी ऑन इट, यू कैन सर्वाइव एंड यू कैन कम आउट स्ट्रॉन्गर. So I'm able to talk about this today for the first time. I've never been able to speak about it before because it was a hard time for me, obviously. So I'm able to speak about it today because I feel like it's okay to speak about the hardships you've gone through because it makes you the person you are today. And which is why I think media plays a huge role. And I know काफी लोगों को बुरा लगता है, हमारी industry बुरी लगती है, which is completely fine. लेकिन आप इस बात को डिनाई भी नहीं कर सकते कि रास्ते भी बहुत निकलते हैं उसमें से, क्योंकि जो स्टोरीज हम बता रहे हैं they're not completely fictional. They're not completely fictional. ये हमारी अपनी जिंदगियों से ही you know इंस्पायर्ड होती हैं स्टोरीज. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ होगा, चाहे वो संगे मरमर हो जाए या सिनफे आहान हो जाए या संगे माँ हो जाए. सिनफे आहान, I'll tell you one thing कि सिनफे आहान की जो स्टोरीज हैं, जो 5-6 लड़कियां हैं, ये असल स्टोरीज हैं. I mean, yeah, exactly, that's exactly it. So everybody that's saying things कि ओ ऐसे कौन करता है या कौन सी अमीर लड़की है ये वो,
funny, they're true stories. You know, ये हमने obviously थोड़ा सा उनको glamorize कर दिया हुआ है, लेकिन ये सारी true stories हैं.